Two of you have come. Tithi, Tithi, open your camera. Good evening, ma'am. Good evening. So today we'll be doing project management. It is a very important part of operations. Like, first of all, you have to know what is a project. Project means something which has a definite start and a definite end. For example, if you are making a road, that is a project. But maintaining that road is not a project. That is an ongoing thing. Till the road lasts, the road has to be maintained. But project will have a definite start and a definite finish. For example, if you are throwing a party, that is a project. It will be held on some date and it will finish. Maybe, suppose it is a marriage party, maybe it will continue for 4 or 5 days. If it is a birthday party, it will be only for 1 day. Or you're making a house. So this will take about 6 months, 7 months, whatever it is, the way you have planned it. So in this project management, we learn how to break down the project into individual activities. Let's say if you're building a house, that means first of all, you'll have to select a plot. Once you have selected the plot, the house will be designed according to the demand of the customers. I said, 2 BHK. If I said 2 BHK, okay, it will have 2 bedrooms. But basically, that is what are 2 bedrooms, a drawing and dining. It can be drawing become dining room, or it can be separate 2 things. It will have a kitchen, it will have 2 washrooms, it will have maybe there's a small balcony. Now, whatever the customer wants. So for that, you have to get hold of an architect who will make the design according to the specification of the customer. Then once it is made, it has to be passed by the municipality. Once the municipality passes it, the excavation of the land starts. Like you will have to lay down the foundation. So you are breaking down. The whole project is building a house. But in that, you are breaking it down into different activities. And then you start scheduling these activities, which will be performed first, which will be second. There can be 2 activities will be done parallelly, and how much time each activity will take. So this is the known as breakdown structure of the total project. So we'll start the see. So the basic thing is, first of all, you have to decide what is your project. Then you have to break it down into different activities. Then you have to schedule those activities. Then you have to draw a network of those activities. Then exactly which, it will be on paper. Before actually doing the project, you do this so that exactly you know how to proceed with your work. And through this, you will get the optimum time
we can calculate the optimum time of finishing the project. Now there are two techniques of doing this. One is known as critical path method and another is known as program evaluation and review technique. First is known as CPM and the next is known as PERT, P-E-R-T. Now, these two techniques will help you in making the diagram of the whole project. So that once you have made the diagram, हेलो मैम pardon, हेलो somebody say something. मैडम स्क्रीन फिर से शेयर कर सकते हो मुझे नहीं दिखाई दे रही स्क्रीन I can't, your voice is not clear. मैडम स्क्रीन Now फिर you से are शेयर saying कर something. स्क्रीन फिर Yeah, से I am able to see the screen, ma'am. Pardon? Krishna is not able to see the screen, it seems. It's not clear. What she is saying is not clear. Yeah, she was not able to view the screen, it seems. Okay. Actually, the slide has not started yet, yes. Yeah, okay. Uh, So this is known as PERT CPM. PERT is Program Evaluation and Review Technique. Can you see it now? All of you can see it now. yeah, yes, ma'am. I am able to see it. Krishna, are you able to see it? यस मैम Okay. Actually, at that time, I had not started it. This is Program Evaluation and Review Technique, and this is known as Critical Path Method. Now, these are two techniques. One, CPM, was developed by an engineering firm in Europe, DuPont. And PERT was developed by in USA. At that time, they were developing a missile, polarized missile. So these, they were developed independently of each other, but the method is similar. The main difference is that in CPM, because they were already familiar with the work they were doing, so the time estimate which they had given to each activity was fixed. Like for example, an architect knows a wall of particular dimension, its length, breadth, width, all those things. If the dimensions, for how many days it will take to finish that wall. Because he is working in that area, he or she. So they have a very good idea. Even a mason will be able to tell you. Because the mason also has the practical knowledge. But in polarized missile, they were doing something of a research. They were developing this missile. So they were not sure how much time each activity will take. So for each activity, they gave 3 times. One was the most optimistic time. Now, what does that mean? In the shortest possible time. And second was your most probable time. And on average, how much it will take. And the third was the pessimistic time. Suppose everything goes wrong, then how much it will take to finish that work. And from these 3, they found the expected time. And from expected time, they found the duration of the project. In both the cases, you draw the critical path. Find the critical path. Critical path gives you the duration of the project. I'll show you one thing.
Suppose there are two friends. Huh? Their project is that they go out to some other city. Now the project is that they'll meet at breakfast, and from there they'll part on their individual work. And again on dinner time they'll come and have their dinner together. To say, suppose they meet at 8 a.m. at breakfast. Then again they decide that they'll have dinner together at say 9 a.m. breakfast, and again at 9 p.m. Again at 9 p.m. they meet. Now, say I name one A and another one B. Now A goes for his, after finishing the breakfast, he goes for his own work. Maybe he has to meet someone. Then from there, he has to do some purchasing. He has to do some purchasing. Then maybe he has to meet another friend. Then he, after meeting maybe some official work he has in the morning, then he does his purchasing, then he meets a friend. And say before at by 8:30 he is free. He is free. But they had decided to meet at 9. So one half an hour he can spend whichever way he likes. Because he cannot meet his friend before 9. Because they had decided at 9 they'll meet. So this is known as slack. This is known as slack.
8:30 to 9, he's on his own. But he had not decided previously what he'll be doing. So whatever he wants to do, maybe he can do some things of purchasing for himself, or he can just listen to some music for half an hour, or go through his mobile, watch something on his mobile for half an hour. Depends upon him. Now this fellow, B, whatever work he has to do, maybe he also has 3 or 4 works to do. But by the time he finishes his work, it is 9 p.m. So he can go straight to the place where they had decided to meet. Okay, he finishes. So this is the long. Sorry, one second. So this is the longer route. You can say it starts at A point at A, then B. D. He also is starting at A because they are starting together. But his routes are different from A to maybe I can say E. F. So one route is A, B, C, D. That is the route of one person. And this another person, the route is A, E, F, D. So you can have one point also over here. G. So one route you have A, B, C, D. Another is A, E, F, G, D. So the first person, the D, when he comes to D, he has finished his work before that. You can mark this point as this. Okay, but this is shorter. A, B, C, H is shorter. It is 9 to 9, it is 12 hours. So he is finishing all his work in 11 and a half hours. But B is taking, the second person is taking 12 hours. So this is the longer path. So this is known as the critical path. Because if he takes more than their timetable will be affected, the whole project will be affected. So he has to complete
all his work according to the time he has. Because he is taking total 12 hours to complete that part. So this is known as the critical path or the longest path, and this is also the duration of the project. Project will be over only when they meet at breakfast and then they finish the dinner. So in any project, this is a very simple project. And in actual life, you will have a very complex project. But the critical path of any project is the most important. And the critical path tells you the duration of the project. Is it clear? So we were doing PERT CPM. So I was just explaining you the concept behind critical path. Critical path is present both in PERT as well as CPM. Basically, CPM, critical path method, and PERT, program evaluation and review techniques, are project management techniques which have been created out of Western industrial and military establishments to plan, schedule, and control complex projects. For example, I was taking this example of making a house. You have planned everything, all the activities which has to be done, like purchasing the land, then getting the design made, then getting it approved by the municipality, then making the foundation, then building the walls, fixing the doors and windows, fixing the roof, doing the final painting, then fixing all the electrical things, plumbing, or everything you have, whatever is required, you have planned it. And you have also allotted time for each activity. Okay, you'll finish the walls, say drawing room walls in so many days, dining room walls in so many days, bedroom walls, first bedroom walls in so many days, and so on and so forth. Each activity you have also given, allotted some time to each activity. Now, once you have made the network, excuse me, once you have planned, then you have scheduled. Then how can you control? So that when we are actually doing the work, see whether you are working according to the plan or not. Suppose you had decided to finish the bedroom in 7 days. Now it is taking more than 7 days. So what is the problem? The problem is identified at that time only. Because it is taking there must be some reason behind it. So you can take the right steps to rectify that delay. So this way you have a control over the whole project. Now this is the history of PERT CPM. PERT CPM or network analysis, because you are drawing a network. I'll come to that. As the technique is sometimes called, developed along two parallel streams, one industrial and the other military. CPM was the discovery of M.R. Walker of E.I. DuPont, D. Numerous and Company. It was in Europe. See, there was a vast distance, but they are almost same.
DuPont D. Numerous and Company, and J.E. Kelly of Remington Rand in 1957. The computation was designed for the UNIVAC 1 computer. The first test was made in 1958 when CPM was applied to the construction. See, this is a construction. So this is an ongoing business. Whoever was working in it was quite familiar with it, of a new chemical plant. In March 1959, the method was applied to a maintenance shutdown at the DuPont works. So this is also a known process at Kentucky. Unproductive time was reduced from 125 to 93 hours. With proper planning, proper scheduling and control, you can reduce the unwanted things which have been done. Because I have told you time and again, in operations management, what you are looking for, effectiveness and efficiency. So this way you can maintain both effectiveness and efficiency, doing the right thing in the right way. So that was in Europe, and now this is in PERT is in US. PERT was devised in 1958 for the Polaris missile program by the Program Evaluation Branch of the Special Projects Office of the US Navy, held by the Lockheed Missile Systems Division and the consultant from Booz Allen and Hamilton. If you don't remember all this detail, but you should at least know that this was done for a military purpose, research work, which is new. So that is why the CPM is mathematical in nature and PERT is statistical in nature. What is the difference between mathematics and statistics? Mathematics, whatever answer you are getting, you are sure, 100% sure. 2 plus 2 is equal to 4. But the probability ki whether tomorrow you will reach your office on time, you don't know. Nobody can predict exactly. Even if you, like for example, even though we know the sun rises every day in the morning, but it is not 100%. Probability is not 100%. Maybe some natural disaster will happen and the sun will not rise. So it is probabilistic in nature. It is statistical. We give certain probability to it. Whether you will reach your office on time, that is probably, you cannot say, I'm 100% sure I'll reach my office on time. Maybe you don't know what will happen. So for anything new, naturally they were not sure of the time consumed by these activities. So they gave them 3 times. And then they took the expected time from that. So PERT is statistical and CPM is mathematical. The calculations were so arranged so that they could be carried out on the IBM Naval Ordnance Research Computer. That was done on UNIVAC 1 and this was done on the Naval Ordnance Research Computer, NORC, at Bowling, Virginia. What is the objectives? A powerful coordinating tool for planning, scheduling, and controlling of projects. This I have already discussed. Planning, scheduling, and controlling. Through this, you can minimize the total project cost and time. Because see, time is money. So you have to be very cautious about the time.
Like for example, what happens? अब तो उतना ज्यादा नहीं होता है, but there was a time, जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, रोड बनाना है, they'll say कि it will be built in so many days, पर होगा नहीं, उसको ठीक से कंट्रोल करते नहीं थे। वो जहाँ 4 महीने में रोड बनाना है, they taken a year, और उसमें क्या होता था, the cost of the project used to rise. So actually so many extra resources were required, which they had not planned in the beginning. तो out of control हो जाता था. So if you do it properly, so you will be controlling the project. You will be finishing the project during the limit which you have decided, you have planned, you have scheduled, so that the total cost also is minimized. क्योंकि मैनेजमेंट का यही प्रिंसिपल है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. देयर इज अ टेक्निक नोन एज लीनियर प्रोग्रामिंग, वेयर वी शो दैट दीज टू थिंग्स आर dual to each other. If you are maximizing the profit, you are automatically minimizing the cost. If you are minimizing the cost, you are automatically maximizing the profit. So these things should go together, because there is a lot of competition. People are looking for good quality at the least cost. Cost and quality, these are very important. And naturally, effective utilization of resources and minimization of effective resources. So naturally, you are using the resources in most effective manner. तो क्या होगा कि naturally wastage will be less, या nil भी है, almost tending to zero. Minimization of delays and interruption during the implementation of the project, because you are monitoring it all the time. You have already planned you will be finishing this particular work in so many days, and this particular work will require all these resources, man, money, material, whatever it is. So if anything goes wrong, you immediately take action. So this way the delays are minimized. What is the functions? CPM PERT can answer the following important questions. How long will the entire project take to be completed? What are the risks involved? Which are the critical activities or tasks in the project which would delay the entire project if they were not completed on time? So the critical activities are on critical path, the longest path, क्योंकि उनके पास कोई slack नहीं है. जैसे 2 friends थे, they had to meet at 9. तो पहला वाला had a slack of half an hour. मान लो वो half hour सो गया, तो भी उसके पास टाइम था, सो गया. Even then he will not be late for the dinner. If he sleeps for half an hour, if he sleeps for more than half an hour, then that is something else. But for half an hour, he has a slack. He can do whatever he or she feels like. But दूसरे वाले के पास there was no slack. By the time he completed all his work, it was 9. उसके पास slack नहीं था. तो critical कौन से activities हुए? B के पास. वो उसको और डिले करता, उनका मीटिंग डिले हो जाता, उनका डिनर डिले हो जाता. तो क्रिटिकल पाथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथ इन एनी प्रोजेक्ट, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ, एंड व्हेन यू आर मॉनिटरिंग इट, क्रिटिकल पाथ पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है. इज द प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल, बिहाइंड शेड्यूल और अहेड ऑफ शेड्यूल? जैसे हमने कहा कि हर एक एक्टिविटीज का हमने हैव डिसाइडेड द टाइम, तो जो डिसाइड किया उस पर खत्म हो रहा है कि उससे ज्यादा ले रहा है, या
हो सकता है कम हो रहा है तो कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या आप कहीं और कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? देयर कैन बी सो मेनी रीजंस. देन मान लो कभी ऐसा हुआ कि यू हैव टू, ऊपर से ऑर्डर आया कि नहीं जो प्रोजेक्ट 1 महीने में खत्म करना था, नाउ यू हैव टू फिनिश इट ऑन 15 days. नहीं 15 days तो बहुत थोड़ा ज्यादा ही हो गया. से 25 days, 30 days की जगह 25 days. Then you have to crash. Crashing means कि shortening the duration of the project. So how will you do that? For that you have to again focus on the critical. क्योंकि मान लीजिए जैसे ये दो फ्रेंड्स हैं, पहला वाला यदि अपना कुछ शॉर्ट भी कर लेता तो क्या फर्क पड़ता, उससे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन तो शॉर्ट नहीं होता. दूसरे वालों को करना पड़ेगा जो क्रिटिकल पार्ट में है, तभी प्रोजेक्ट शॉर्ट होगा. The frame for PERT and CPM. What are the steps? Essentially, there are 6 steps which are common to both the techniques. The procedure is listed below. Define the project and all its significant activities or tasks. उसको activities भी कह सकते हैं, tasks भी कह सकते हैं. The project made of several tasks should have only a single start activity and a single finish activity. Set a definite start and definite finish. तो जो नेटवर्क ड्रॉ होता है उसमें एक जगह से शुरू होते हैं एक्टिविटीज, एक जगह खत्म होता है. यू डोंट लीव एनीथिंग हैंगिंग, या बहुत क्रिस क्रॉस नहीं करके कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है. उस इट शुड बी क्लियर, पीपल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर मूविंग. डेवलप द रिलेशनशिप अमंग द एक्टिविटीज. कौन पहले करना है, कौन बाद में करना है, कौन पैरेलल करना है. जैसे मान लीजिए घर बना रहे हैं, अब सबसे पहले छत तो नहीं बना देंगे. कैन यू डू दैट विदाउट मेकिंग द वॉल्स? कैन यू मेक द रूफ? तो लॉजिक तो फॉलो करना होगा ना. तो रूफ विल बी मेड ओनली व्हेन द वॉल्स आर ऑल मेड. या फाउंडेशन तो सबसे पहले डालना होगा. हो सकता है उसके बाद फ्रॉम फाउंडेशन टू रूफ यू कैन स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है अप्रोच. किसी ने पहले वॉल्स बना लिया, विंडोज का एंड डोर्स का, बस they have left the space for it, not done anything about it, and after making the roof then they start fixing whether it is the frame, the window and windows and door frames. It can be of any material you like. Some people use metal, some people use wood. तो डिपेंड करता है ना जो घर बना रहा है क्या उसका बजट है और व्हाट लाइकिंग है, व्हाट लुक्स बेटर टू हिम और हर. तो यू कैन दैट कैन हैव. प्लम्बिंग ऐसा है कि यू कैन नॉट डू इट आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि फाउंडेशन जब ले हो रहा है देन ओनली यू हैव टू डिसाइड हाउ द प्लम्बिंग विल बी डन. ये तो नहीं है कि फिर दीवार तोड़ के आप प्लम्बिंग बनाएंगे, उसको तो उसी समय बनाना होगा. तो ये टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है, बट एक लॉजिक जो है वो तो फॉलो करना ही होगा ना. तो आपको आर्किटेक्ट भी बेवकूफ नहीं बना सकता. इफ यू आर फॉलोइंग द लॉजिक एंड यू कैन टेल हिम कि ये काम क्यों नहीं हुआ अभी तक.
develop the relationship among the activities, decide which activities must proceed and which must follow. Draw the network. एक बार जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज है, क्या क्या टास्क है, क्या उनका शेड्यूलिंग होगा, then you draw the network. Each activity should have a unique event number. Dummy arrows are used where required. जैसे वो डायग्राम को क्लियर बनाने के लिए sometimes we use dummy activities which is actually not happening. जैसे हम जो रियल एक्टिविटीज हैं उसको एक लाइन से करते हैं डिनोट, और जो डमी एक्टिविटीज है उसको डैश, ये डमी है. तो द टाइम टेकन टू डू अ डमी इज 0, क्योंकि वो एक्चुअली तो कुछ हो नहीं रहा है. ये तो केवल आपके नेटवर्क को क्लियर बनाने के लिए वी आर यूजिंग इट. assign time and or cost estimate to each activity. जैसा ये नहीं हुआ कि एक पहले ही एक्टिविटी में आपने सारा पैसा खर्च कर दिया, अब दूसरे को करने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं बचा. तो यू हैव टू डिसाइड कि ये एक्टिविटी है, पहले में इतना लगेगा, दूसरे में इतना, जो भी मेरा बजट है उसके हिसाब से. जैसे आप फॉर योर होम आल्सो यू मेक अ बजट कि हमें I've received my salary on 1st and I have to use this for whole month. So you spend accordingly. So when you are doing a project also you should spend accordingly. हर एक एक्टिविटी इसीलिए पहले से प्लान कर लीजिए, पहले से आप डिसाइड कर लीजिए किस एक्टिविटी में क्या लगेगा. तो you will not go over the cost and you will be able to finish the project smoothly. Complete the longest time path through the network. Compute the longest time path through the network. This is called the critical path. जैसे हमने कहा ना, ये longest path critical path है and it is the most important. Use the network to help. तो ये helps you in planning, scheduling, monitoring and control. ये नेटवर्क आप बना लेंगे किसी भी प्रोजेक्ट का, तो because you have the plan before you, how things will be moving, how much each activity will be taking, and you can see whether it is on time or not. The key concept used by CPM PERT is that a small set of activities which make up the longest path through the activity network control the entire project. Critical path is the most important. इस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है. If these critical activities could be identified and assigned to responsible, तो किसको देंगे? क्योंकि in your project, number of people will be working. So you should give this critical activities assigned to those people who you are sure they'll be completing the work according to the plan. Non-critical activities में you have this facility of slack. थोड़ा उसमें आप रिलैक्स कर सकते हैं. उसमें शायद उतने रिस्पॉन्सिबल पीपल को ना भी दे तब भी हो जाएगा काम. So this is known as project management. Project को किस तरह से मैनेज करना है? Project is an interrelated set of activities that has a definite starting and an ending point that results in unique product. मान लीजिए आप घर भी बना रहे हैं, मान लीजिए आपके कॉलोनी में कितने सारे घर होंगे, but every house is unique. It is according to the taste of the person living in that house.
Even an office, your office will be according, if you are doing some business and you want an office, it will be according to your requirement, according to your taste, that the product is unique. जैसे मान लीजिए हम एक साथ हाउसिंग कॉलोनी बना रहे हैं, but each housing colony will be unique. For them, the whole block of houses is a project. Project management, it is a scientific way of planning, implementing, monitoring, and controlling the various aspects of a project, such as time, money, जो भी resources हैं, such as time, money, materials, manpower, and other resources. So, अब we'll be learning the different network planning methods. As I have told you, CPM of PERT है, दो है. It requires 4 steps: describing the project, diagramming the network, estimating time of completion, monitoring project progress. इसमें नेटवर्क डायग्राम में व्हाट डू यू रिक्वायर, तो एक्टिविटीज कौन कौन से होने चाहिए, फिर उनके रिलेशनशिप क्या है, प्रेसिडेंट विच इज प्रीसीडिंग विच, कौन सा सक्सेसर है, एक प्रीसीड करेगा तो नेचुरली कुछ सक्सीड भी करेगा, तो द सक्सेसर यू हैव टू आइडेंटिफाई, और इवेंट क्या है. और ये है कि नेचुरली इट इज अ प्रीसीडिंग एक्टिविटी, तो इट शुड बी कंप्लीटेड बिफोर द अदर वन स्टार्ट्स, नहीं तो अदर वन स्टार्ट ही नहीं हो सकता. जैसा आई टोल्ड यू कि इफ यू आर मेकिंग द रूफ, तो उसके पहले सारे वॉल्स तो खड़े हो जाने चाहिए ना, डोर्स एंड विंडोज लगे ना लगे, मगर वॉल्स तो खड़े हो जाने चाहिए. ये तो नहीं है कि उसको हवा में हम बस लगा देंगे. एरोज जो इसमें है वो डायरेक्शन, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन. एरोज इंडिकेट अ लॉजिकल प्रोसीजर्स. फ्लो ऑफ द डायग्राम इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इसे इस तरफ से इधर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट. और एरोज जहां तक वो इंटरसेक्टिंग ना हो, फिर वो ठीक से पता नहीं चलता कि फ्लो कैसे हो रहा है. डैंगलिंग शुड बी अवॉइडेड. कोई एरो ऐसे बीच में हैंगिंग नहीं छोड़ सकते हैं. So there are 2 ways of doing this. One is activity on arc. Arc कहिए चाहे arrow कहिए. A on A. There are 2 nodes. I'll show you. Activities are represented by an arrow between 2 nodes. एक ये नोड हुआ, एक ये नोड हुआ, और इसके बीच एक एरो हुआ. तो दिस इज वन एक्टिविटी. इज इट क्लियर? इसे हम ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं. मान लीजिए कि एक नोड 1 हुआ, यहां से इधर गए, ये एक नोड 2 हुआ. वही चीज यहां ड्रॉ किया हुआ है. ये एक्टिविटी ए हो गया. दिस रिप्रेजेंट्स एक्टिविटी ए. फिर डमी एक्टिविटी 2 सिचुएशन में यूज होते हैं. जैसे ये देखो,
एक तो ये एक्टिविटी हुआ, मान लो इसको हम ए लिखते हैं, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये हम डमी, तो इट इज डॉटेड लाइन, डमी को डी डैश कर देते हैं, ये डी हुआ। अब क्या है, फ्रॉम ए टू डी, मैंने एक तो बी आया और सी इज ऑल्सो गोइंग फ्रॉम ए टू डी। अब दोनों को पैरेलल तो नहीं दिखा सकते हो, तो मेक इट क्लियर, यू कुड हैव मेड फ्रॉम बी टू डी को भी डमी से दिखा सकते हो, आइदर ऑफ देम, बट आई हैव टेकन सी। तो सी इज ऑल्सो गोइंग टू डी, बिफोर डी both B and C should be completed. So this is being shown by a dotted line. तो clear हो गया. When two or more activities start and end at the same node, diagram 1. ये तब I'm using dummy. हुआ. दूसरा है, when two or more activities share the same predecessors, but not all predecessors are shared. कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं. तो to make that thing clear, तो यहाँ क्योंकि ए से सी, सी से ई, ई से जी, बी से डी, बट सी इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ एफ। इसको दिखाने के लिए हम एक ने डमी यूज किया है। तो टू मेक यू whatever procedure you are showing clearer, you use dummy activities. So that was activity on arc or activity on arrow. When you are using two nodes and one arrow to represent one activity. Another is known as activity on node. Node को ही आप एक activity मान लीजिए. Then it is known as activity on node. Activities are represented by nodes. Arrows indicate precedent relationship between them. Direction दिखा देता है. तो ये start हुआ. Here you don't, over there we are not using this start. वो node से ही पता चलता कौन सा कहाँ से start हुआ है. Start A. So A is an activity. From A you go to B. From B you go to both C and D. From C you go to both C and D goes to E. यहाँ खत्म हो गया. This is a simple. So ये finish. So these activities are on node. Planning the schedule of the project. Time estimate include total time of completion, early start, सबसे माने earliest when the activities to start, early finish when at the earliest it should finish. उसी तरह late start late, माने जहाँ slack है, जैसे for example that person had a slack of, तो वो 5-10 मिनट यदि बैठ के बस चुपचाप बैठा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट इफ यू आर अ क्रिटिकल एक्टिविटी तब आपको उसी समय स्टार्ट कर देना पड़ेगा. एक खत्म नहीं हुआ कि दूसरा स्टार्ट कर देना पड़ेगा. तो अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश.
So we go find out these things early. When we'll do an example, it will be a numerical example, it will be clearer. So for early start, early finish, we go from left to right. This is known as forward pass. For late start, late finish, we go from right to left. This is known as backward pass. And slack is the difference between both start or both finish. When a late start, early start, late start का difference क्या है, या early finish, late finish का difference क्या है? तो if your calculation is correct, they should be same. यदि same नहीं है, तो इसका मतलब है you have made certain mistake in your calculation. Look at this simple project. 4 एक्टिविटी है, A, B, C, D. A का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, B का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, C का A है और D का A and B both है. टाइम ड्यूरेशन क्या है? A takes 5 days. Now duration of the time you can write in minute, you can write in week, you can write in days, you can write in months, you can write in, पर जो भी है एक यूनिट होना चाहिए. If you have written 2 weeks, तो 2 weeks तो किसी को 1.5 weeks ही लिखो. यदि days में लिखना है तो 2 weeks मतलब 14 days. उस तरह से लिखो. तो it should all be on the same unit. ये हमारा एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है. इसका नेटवर्क ड्रॉ करो. एक्टिविटी ऑन एरो. तो ए और बी दोनों शुरू में स्टार्ट हुए. दे हैड नो प्रीडिसेसर. हुआ ना, दोनों ए और बी स्टार्ट हुए. सी का प्रीडिसेसर क्या था? सी का ना, देखो यहाँ है दोनों स्टार्ट हुए क्योंकि इनका कोई प्रीडिसेसर नहीं है. ये एरो बनाना जरूरी है. ये ए है, ये बी है. अब सी का प्रीडिसेसर कौन है? ए. तो सी नेचुरली यहां से निकलेगा. अब डी का ए एंड बी दोनों हैं, तो बी भी है और ए भी है. तो दिस विल बी द डमी. अब डी का क्या है? ए भी है, तो ए हैज कम थ्रू अ डमी.
क्योंकि ए को हम दो जगह तो नहीं दिखा सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अब ए सी का यहां दिया, फिर ए इधर भी आना है डी का, तो दोनों जगह तो नहीं, तो दिस आई हैव शोन इट थ्रू डमी एंड सी एंड डी आर द फाइनली दे मीट। ये तो दिस इज द डायग्राम। ये सिंपल सा प्रोजेक्ट का ये डायग्राम बनेगा। डी का दोनों ए एंड बी है, तो one has come directly and another has come through dummy. एक्टिविटी और नोड में हम कैसे करेंगे? स्टार्ट, दोनों स्टार्ट हुआ ए एंड बी, ए का सी है, तो ए सी के पास भी जा रहा है, डी, यहां वी डोंट नीड अ डमी। इन एक्टिविटी और नोड वी डोंट नीड अ डमी। अब यहाँ सी एंड डी खत्म हो गया, तो वी डोंट लीव इट लाइक दैट। उनको हमें ये फिनिश पे दोनों को लाके खत्म करना पड़ेगा। हो सकता है ये पहले खत्म हो जाए, ये बाद में खत्म हो, या ये पहले खत्म हो जाए, ये बाद में हो जाए, ये पहले खत्म हो जाए, ये बाद, पर दोनों को फिर वहां फिनिश पे लाके करना होगा। तो इससे पता चलेगा कहाँ स्लैक है। ये नोटेशन भी यूज करते हैं हम, जैसे एक्टिविटी कितना क्या है, ए बी सी डी क्या है, क्या टाइम लग रहा है उनको खत्म करने में कितना टाइम लग रहा है, वो यहाँ लिखते हैं। यहाँ अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश। अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश, और ये दोनों का जो डिफरेंस है वो स्लैक। तो जहां स्लैक 0 है, दैट इज द क्रिटिकल पाथ। दैट इज द वे यू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। क्योंकि एक्चुअल लाइफ में तो बहुत सारे पाथ्स होंगे ना। अब हर एक, जैसे वहां तो 2 ही पाथ्स थे, द प्रोजेक्ट व्हिच आई हैड टेकन इन द बिगिनिंग। तो उससे क्या होता है ना कि हम आराम से दोनों पार्ट आइडेंटिफाई किया, देखा कौन लॉन्गर है। पर जहां 5-6 पार्ट्स है, कम से कम 5-6 पार्ट्स है, तो फिर बहुत डिफिकल्ट होगा। तो wherever the slack is 0, that is the critical path. This is just the legend. जैसे वो था ना, वही वाला है। स्टार्ट, पहला एक्टिविटी ए, ड्यूरेशन उसका 5 days था। नाउ अर्ली स्टार्ट में वो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, तो 0 हो गया स्टार्ट। इट टेक्स 5 days टू कंप्लीट दैट एक्टिविटीज। तो अर्ली फिनिश 5 हुआ। अभी हम नहीं फाइंड आउट करेंगे लेट स्टार्ट लेट फिनिश, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग फॉरवर्ड पास, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ए हुआ, दिस इज द
ए से बी का देखिए, बी भी उसी समय स्टार्ट हुआ जब ए स्टार्ट हुआ, तो 0 है स्टार्ट, इट टेक्स 6 days टू कंप्लीट इट, तो 6 उसका अर्ली फिनिश हुआ। समझ आ रहा है? एक्चुअली वो जो डेटा दिया हुआ ना उसको ध्यान में रखते हुए करना है। एक्चुअली आई एम टीचिंग यू ऑनलाइन, तो थोड़ा ये मुश्किल होता है, बोर्ड में तो आराम से दिखा सकते हैं दोनों बगल बगल। ठीक है, यहां से अब एक्टिविटी ए है, इट इज द predecessor of both C and D. तो C, तो इसका अर्ली फिनिश क्या हुआ 5, तो ये तभी स्टार्ट होगा जब ये खत्म हो जाएगा, तो इसका अर्ली स्टार्ट क्या होगा 5, इसको करने में 4 days लग रहा है, तो अर्ली फिनिश क्या होगा 9। समझ गए? ये भी उसके बाद ही स्टार्ट हुआ D, मगर both A and B are predecessor of D, both A and B, isn't it? तो ये तो तभी स्टार्ट होगा ना जब A और B दोनों खत्म होंगे, तो ये तो 5th डे को खत्म हो गया, मगर B खत्म हुआ 6th डे, तो इसका अर्ली स्टार्ट क्या होगा 6, क्योंकि वो स्टार्ट कर ही नहीं सकता जब तक B नहीं खत्म हो जाए। ये तो खत्म हो गया है पर B नहीं खत्म हुआ है। Is it clear? So that is why early start of D is 6. And it takes 2 days to complete D. So early finish हो गया 8. Here it takes 4 days to complete it. So 5 plus 4 9. ये हो गया। अब ये हमारा फॉरवर्ड पास खत्म हो गया, दोनों खत्म हो जाएंगे तभी फिनिश हो गया। ठीक है, अब वी गो बैकवर्ड पास। अब ये यहां तक पहुंचने में 9 days लगा, इसको यहां तक पहुंचने में 8 days लगा, मगर दैट मीन्स कि ये तो एक दिन इसके पास और मिल गया ना, ये तो 8 दिन में खत्म कर दिया, पर खत्म तो तभी होगा ना जब 9 डे सी भी खत्म होगा, तो इसीलिए इसका और इसका दोनों 9 days है। लेट फिनिश है। Instead of finishing it on 8th day, it has 1 day more, so it can latest it can finish by 9 days. तो इसीलिए दोनों 9 है, सी का भी और डी का भी। ना अब बैकवर्ड पास है ना, तो you have to subtract 9 minus 4 तो 5 हुआ, और यहाँ 9 minus 2 तो 7। तो अब पता चल गया ना, दिस इज लेट फिनिश लेट स्टार्ट। ये उल्टा करेंगे, उसमें पहले फिनिश देन स्टार्ट, अरे सॉरी पहले स्टार्ट देन फिनिश, इसमें उल्टा है, पहले फिनिश देन स्टार्ट, क्योंकि मूविंग बैकवर्ड। अब डी का देखिए, इट इज लेट फिनिश इज 7, उसके बाद ही बी उसके पहले है और ए भी उसके पहले है। तो ये दोनों में, इसके पहले सी भी है, सी इज ऑल्सो फॉलोइंग ए। तो इसमें जो मिनिमम होगा उसमें जो मैक्सिमम हुआ वो हमने लिया,
जब हम फॉरवर्ड पास में जा रहे थे तो 5 और 7 में मैक्सिमम 7 था, तो हमने यहाँ 5 और 6, 5 और 6 में मैक्सिमम 6 था, तो हमने 6 लिया ना, क्योंकि दोनों जब कंप्लीट होंगे तभी तो डी स्टार्ट होगा. बोथ ए एंड बी शुड कंप्लीट बिफोर डी स्टार्ट्स. तो इसलिए हमें यहाँ 6 लिया, बट ये उल्टा है, तो इसमें हम मिनिमम लेंगे. ये दोनों के तो 5 है, इसमें 7 है, इसमें 5 है, तो 5 मिनिमम है. It can be more than 2. Situations can be where you have more than 2. तो अगर over here it is a simple project, I am taking only 2. तो 5 लिया, यहाँ 5 लिया, 5 से माइनस किया 5, तो ये 0 है. ठीक हो गया, ये कंप्लीट हो गया. यहाँ है ये दोनों का मिनिमम दिया, ये इसका तो यही है, तो इट इज 7. 7 माइनस 6 1. ये भी कंप्लीट हो गया. नाउ यू टेक द डिफरेंस. देखो, या तो तुम अर्ली स्टार्ट लेट स्टार्ट, या अर्ली फिनिश लेट फिनिश, जो भी करो, इट विल बी 0 माइनस 0 और 5 माइनस 0, तो 0 ही स्लैक है. 5 माइनस 5 और 9 माइनस 9, तो 0 है, तो स्लैक 0 हो गया. यहाँ 7 नेचुरली 7 इज ग्रेटर, तो माइनस 7 माइनस 6 1 और 9 माइनस 8 1, उसमें भी है 1 माइनस 0 और 7 माइनस 6 1. तो हियर यू हैव स्लैक, दिस रूट यू हैव स्लैक. तो दिस इज द क्रिटिकल पाथ. तो हमने ये ड्रॉ किया. ये क्रिटिकल पाथ है, जहां डबल लाइन बना दिया वो क्रिटिकल पाथ है, बिकॉज दैट इज द लॉन्गर 9 होल. ये 8 डेज में कंप्लीट हो रहा है, ये 9 डेज में कंप्लीट हो रहा है. इज इट क्लियर? So that is the critical path. So when you are monitoring the project, you should pay more attention to the path AC. Now this is a example which is a much more bigger project. You have got A, B, C, D, E, F, G, H, I activities and immediate predecessor are given. जो शेड्यूलिंग कर दी है हमने. Actually, actual life में तो you have to do the scheduling yourself. पर जो हम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो शेड्यूलिंग हमें करके दिया हुआ है. They have given us the immediate predecessor. So A does not have a predecessor. That means it is starting from A. A is the first. B का A है, C का A है, D का A है. That means कि B, C, D are starting from A. E का D है, तो from D to you are going to E. F का B, C और E है, तो B, C, E are finishing in F. F स्टार्ट होने के पहले ये तीनों खत्म हो जाने चाहिए. G का F है, केवल F है. H का भी F है, तो F के दोनों है, G और H के दोनों के प्रीडिसेसर F है, और I का G है. A time in week is also given to you. तो ये प्रोजेक्ट हुआ, जो नेटवर्क डायग्राम हुआ. सी, यहाँ A से शुरू किया हमने, A से B, एक्चुअली इट इज B, D and C, यहाँ छूट गया है, ये C होगा. A से तीनों है ना, एक B, C, D. अब E का D है,
तो ये ई है। इसी को क्लियर करने के लिए, क्योंकि बी को हम सीधे एफ पर ले जाते तो फिर गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए इट इज कमिंग थ्रू अ डमी। Here also see if I have taken directly to, so it would not have been clear, so I have used a dummy over here. F का B, C and E तीनों हैं, so this is F. This is F. इसका क्या है? B, C और D, sorry, B, C और E. ये these two have come through dummy and this is coming directly. Is it clear? G का और H का दोनों का F है, तो यहां से G, this is G and this is H. ठीक है, क्लियर? और I का केवल G है, I का केवल G है। तो इसीलिए यहाँ फिर डमी यूज हुआ है, क्योंकि फिर हम बीच में इसको नहीं लटका दे सकते हैं ना। ये यहाँ पर आके खत्म हो गया, ये 10th है, हालांकि 101 के नीचे हो गया, बट इट इज 10th नोड। दिस इज एक्टिविटी ऑन आर्क और एरो। आप चाहिए तो दोनों उसका टेबल भी ले लीजिए और ये डायग्राम भी ले लीजिए। In this, I found out the early start, early finish, late start, late finish and slack for each activity. तो यहाँ करेंगे ना, जो उसका एक्टिविटी का ड्यूरेशन रहेगा, तो A will be 0 to 0 है, स्टार्ट वही से स्टार्ट हो रहा है, and it takes 3 days or 3 weeks जो भी दिया है, तो it will be 0 or 3. B, C और D तीनों A के फिनिश होने के बाद हो रहा है, तो तीनों का स्टार्ट 3 हो गया, और whatever is the duration of each वो ऐड कर दीजिए, तो 3 प्लस वो शायद हो सकता है 3 होगा, ये 3 प्लस 7 होगा, ये 3 प्लस 9, हाँ 9 होगा। फिर उसी तरह आपको देखते रहना है, पूरा डायग्राम के साथ देख के, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश। फिर ये तो ऐसे ही चला फॉरवर्ड पास है। अब हम यहां से शुरू करेंगे लास्ट, ये लास्ट इसका फिनिश 37 डेज में हो रहा है, तो वील स्टार्ट फ्रॉम हियर 37। उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड देन वी मूव बैकवर्ड, तो you get these values. Now you subtract either early start, late start or early finish, late finish. You get the slack. तो कहाँ कहाँ 0 आया? Slack ये 0 है, ये 0 है, इसको हमने यहाँ स्टार से दिखा दिया है,
ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0. तो this is the critical path. This is the critical path. And the duration of the project is 37, जो भी दिया है, days, week जो भी है, तो that is the duration of the project. And these activities are to be monitored more seriously. ऐसा नहीं है कि दूसरे को छोड़ देना है, but to complete the project on time, you have to focus more on critical path. Critical path is where slack is 0. The problem critical path is A, D, E, F, G and I. Therefore, duration of the project is 37 weeks. अब ये PERT है. ये जो एग्जाम्पल है PERT का है. PERT means प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. तो यहाँ देखिए आपको 3 टाइम दिए हुए हैं. TO, the most optimistic time. TM, the most probable time, and TP is the most pessimistic time. Every activity has been given 3 time. यहाँ से हम will find out TE, expected time. ये फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड टाइम को फॉलो निकालने का. इट इज नथिंग बट द अरिथमेटिक वेटेड अरिथमेटिक मीन. हम सबसे ज्यादा वेट किसको दे रहे हैं? मोस्ट प्रोबेबल टाइम को 4 है, और ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक को 1 तो 4 + 1 + 1 6 हुआ. तो इट इज TO + 4TM + TP divided by 6. And this is the variance. क्योंकि ये तो हमने कहा ना स्टैटिस्टिकल है, जहां वेरिएबिलिटी होगा, तो इसीलिए वेरिएंस को भी कैलकुलेट करना है. वेरिएंस का फॉर्मूला है TP - TO divided by 6 होल स्क्वायर. तो इन तीनों से फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट TE. is actually when you are doing it, it's very easy. You put this on an Excel sheet और वो फॉर्मूला डाल दीजिए. आपको तुरंत ऐसे करने में तो टाइम लगेगा, एक एक बैठ के करते रहिए, बट दैट वे तो इट इज वेरी इजी. एक्सेल पर डाल दिया, फॉर्मूला डाल दिया, then drag it, वो सारा कॉपी हो जाएगा. you will get the value of TE. और उसी तरह वेरिएंस का भी निकाल लीजिए. ठीक है. अब we have to draw the network. ये नेटवर्क है, ये it is on node, arrow on node, अरे सॉरी एक्टिविटी on node. स्टार्ट हुआ A से B और C में गया, फिर जो भी है जो डेटा है उससे, है ना. A से स्टार्ट हुआ, B का दोनों ही B और C का A है, D का C है, E का B and D है, F का E है, G का F है. तो बेस्ड ऑन दैट, सो स्टार्ट से फिनिश तक. देखो ये ऐसा नहीं है ये यहाँ D खत्म हो गया, यहाँ तो यहाँ छोड़ नहीं देंगे, इसको भी फिनिश पर लाना पड़ेगा. और ये तो लास्ट का है ही, फिनिश पर आया. Then we found out the critical path. ये छोटा सा है तो I have not found out the early start, early finish. इसी में दोनों जो भी ज्यादा नहीं है ना, A, B, E, F, G, A, C, D, E, F, G और A, C, D, ये 3 पार्ट्स है इसमें. ये 3 पार्ट है. The network has 2 parts. You can take third one, उसका भी उससे कम ही आएगा. तो the longer one is A, C, D, E, F, G, which I have shown through red arrow. दूसरे पाथ को I have shown by brown arrow. मगर जो क्रिटिकल पाथ है, तो क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन से हो गए? A, C, D, E, F, G. So it takes 64 weeks to complete this project.
ये आपका कैलकुलेशन आया. बट सी ओवर देयर जो 37 वीक्स आया था, दैट इज यू आर श्योर द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 37 वीक्स. बट हियर you are not sure. This follows a Gaussian distribution या normal distribution जिसको हम लोग कहते हैं. Normal distribution क्या है? इस तरह का कर्व है, which is bell shaped. It does not touch x-axis. It touches x-axis at infinity, minus infinity and plus infinity. This is asymptotic to x-axis. 50% of the value lies before mean and 50% after mean. तो mean यहाँ है. तो ये जो expected ये आया है, this is mean. This is 64. As you know, to find out anything, you need both mean and standard deviation. This you don't know. This you know. तो इसके लिए हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ता है. ये वेरिएंस जो हमने कैलकुलेट किया है सबका क्या है ना, TP माइनस TO डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर. तो ये वेरिएंस, तो हम उन्हीं वेरिएंस को ऐड करेंगे जो क्रिटिकल पाथ पर है, क्योंकि क्रिटिकल पाथ ही ना ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट दिखा रहा है. 64 किसका है? क्रिटिकल पाथ का. उसी का वेरिएंस का. तो वी हैव टू ऐड this फिर ये this सबको नहीं ऐड कर देना है. ओनली द वेरिएंस ऑफ द क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज. तो 64 डेज का क्या है प्रोबेबिलिटी? आई सेड इट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और दैट इज द मीन. तो मीन कितने पर है? 50% पर. Hence the probability that the project will be completed in 64 days is 50%. Is it clear? अब मान लो कब पूछ रहा है what is the probability that the project will be completed in 70 days? So naturally it will be more than 50%. 64 में तो कंप्लीट हो रहा है, 50% है. अब उससे ज्यादा है तो अब ये कितना है ये आप कैसे निकालेंगे? Yes, somebody asked you what is the probability that it will be completed in 58 days. तो कम होना चाहिए. ये हम एक we can say that, but exactly what is the value that you have to calculate, उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है, when you are mapping any normal distribution to a standard normal distribution, जिसकी you get a table of that. आप किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला, where its mean is 0 and standard deviation is 1. तो यहाँ मीन क्या है? 64. और x क्या हो सकता है? 70 भी हो सकता है, 58 भी हो सकता है. समझ में आ रहा है ना? मीन इज 64 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज जो आपने कैलकुलेट किया था उसको ऐड कर दीजिए. वो ऐड किया नहीं हमने,
यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन ऐड कर दीजिए, वही वैल्यू यहाँ, और फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व यू कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। तो जैसे देखिए, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व भी दो तरह के होते हैं। एक ऐसे रहता है, z की वैल्यू रहती है, तो इसको 1 2 ऐसे करके पॉइंट, तो when z is 0 और probability is also 0, तो इसका मतलब है वो वैल्यू यहां से दी हुई है, इस पॉइंट से। अब when z is 0 और probability is 0.5, that means कि वैल्यू यहां से दी हुई है कि यहां तक 50% है, तो 0.5 हुआ। तो अभी next class I'll show you the calculation. I have missed out on that. तो वहां से हम देख के बता सकते हैं, इफ आई गेट वैल्यू से, हमें वैल्यू आता है z का, तो वहां से प्रोबेबिलिटी आती है 0.2। तो यदि हम यूज कर रहे हैं टेबल वेर z is 0, probability is also 0, that means I have to add 0.5 to it, क्योंकि क्या है, वो तो ये वैल्यू हुई ना, ये 64 था, ये 70 है, उसके बियॉन्ड है, तो ये हमें बता रहा है टेबल की दिस इज 2%। तो उसमें हमें 0.5 ऐड करनी होगी। इफ when I am taking less than normal, that is 58, वैल्यू तो वही आएगा, क्योंकि उधर 64 जितना आगे उतना ही पीछे है। तो here I have to find out this area, ये क्या है, 0.5 से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0.5 minus 0.2, and here you have to add, क्योंकि तुम्हें ये एरिया निकालना है up till this point। तो ये 0.5 है, ये 0.2 है, और ये माइनस जो आएगा यहाँ, तो इट विल बी व्हाट, 58 minus 64। तो 58 छोटा है, तो यू विल गेट z एज माइनस, बट टेबल में माइनस वैल्यूज नहीं होते हैं। माइनस का मतलब है इट इज लेस देन मीन, एंड प्लस का मतलब है इट इज मोर देन मीन। वैल्यू आपको पॉजिटिव ही लेनी होगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? ये तो हम दूसरा जो पूरा कैलकुलेट किया हुआ वो दिखाते हैं। Can you see this? ये दिख रहा है? ये भी Yeah, वही yes, है। ma'am. You are given the activities, you are given the immediate predecessor, optimistic time, probable time, इससे कैलकुलेट कर लिया। एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट कर लिया। दिस इज द डायग्राम। यहाँ से क्रिटिकल पाथ निकाल लिया, क्योंकि वेरिएंस हमें केवल क्रिटिकल पाथ के लिए चाहिए। मैक्सिमम इस सारे पाथ्स को ले लिया जो
maximum था, that is A, B, D, F, H. Which comes to 47 days or 47 weeks, whatever it is. So critical activities are A, B, D, F and H. यहाँ पर भी वेरिएंस उसी का निकालेंगे. Actually, just now I don't have a solved problem. In that also I have left the last portion. In next class I'll show you. Ki Yeah, sure, ma'am. you, how do you actually calculate the probability ki whether it is being completed, if it is being completed for more than the expected duration which has been calculated, or it is less than. If it is less than, then what will be the probability? If it is more than, what is the probability? Or you can try for yourself also if you want. Can you see this presentation? Yes, ma'am. Huh? Yeah, yes, ma'am. PERT and CPM problems? No. No. No, we are seeing the PERT The problem. last line of PERT problems. Path. Now can you see it? Yeah, yes, ma'am. Yes, madam. This is another problem. Here, instead of activities being given as A, B, C, D, it is from node 1 to 2. So drawing this becomes easier. Node 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 3 to 4, 3 to 5, 2 to 6, 4 to 6, 5 to 6. Then the 3 time estimates are given. Then I have calculated the expected time and the variance of each activity. And this is the network. Because drawing it becomes very easier. 1 to 2, 1 to 3, 2 to 6, 2 to 4, 3 to 6, 3 to 5, 3 to 5 to 6. These are all given to you. And the duration you have to calculate. Once you have calculated using this formula, then there are 3 paths
So I have calculated, 4 paths. So I have calculated the duration of all the 4 paths. 1, 2, 6, 9 plus 6 is 15. 1, 2, 4, 6, 9 plus 6 plus 9, 24. 1, 3, 4, 6, 5 plus 6 plus 9, 20. 1, 3, 5, 6. Again, you calculate and it is coming. The maximum is 24. So this is the critical path. This is the critical path. Now, I've calculated the variance of all the activities, just added up for the critical path. It is coming to 6.78. Now, standard deviation is what? Square root of variance. So I have found out the square root of variance. So it is coming to 2.60. So 24 is the mean value. 50% chances are that the project will be completed in 24 days. अब यहाँ 2 चीज पूछा है. वही है, more than 24 days or less than 24 days. What is the probability that the project will be completed in 27 days? What is the probability that the project will be completed in 21 days? So Z, I found out Z. Z पहले में X is 27, दूसरे में X is 21. And you know mu is 24, sigma is 2.6. So I have taken it as Z1 and Z2. क्योंकि 2 है ना, it is is 2.6. This is mu. This is sigma. ठीक है, just substitute those values. So you get value of Z as 1.15. Now in the table, you have to see what is the probability besides 1.15 when Z is 1.15. So from the table, I've got this value 0.3748. So this is what? This is this area. This is 24, this is 27. The probability, so here I have to add 0.5 because in this table, when Z is 0, probability is also 0. So you have to add 0.5. And when X is 21, you are getting minus 1.15. So minus is not minus, it is just the direction. If it is less than mean, it is minus. Value you will have to take for 1.15. Again, you will get the same value. So here you have to subtract this from 0.5 because this is what? This is 1. This is this value, this area. Now this is what? You have to calculate for 1
up till this point. And for the other one, you have to calculate up till this point. So you are adding 0.5 plus this. That is 0.748. Here, you have to calculate this area. So you are subtracting from 0.5 this area. Because the whole thing is 0.5 up till here. So you are just subtracting this from 0.5. And so you get two answers, 87.48 and 12.53. So completing it in 27 days, the probability is 87.48. And completing it in 21 days, the probability is 12.52. This is the table which I was talking about. So your is 1.15. So you have 1.1 over here. 5 you have to look here. So it is this value, 13749. This table you can get in any book on statistics or from the net. See over here, it is given, then Z is 0, probability is also 0. So it is from this middle point to whatever point you are looking at. Excuse me. Do you have any more questions to ask me? Any questions? If you have any, we can continue in next class also. Ma'am, you can share these particular slides, ma'am. Pardon? We will go through. You can share this particular PowerPoint. I'll be sending these two PowerPoint, yesterday's and today's. Yeah. Okay. We will go through this particular calculation once, and if we have anything, we'll let you know on next class. Okay. Okay. So you don't have any other doubt? Should I? No. Okay. Yeah, we can conclude. Okay. Good night. Have a nice Good night, week ma'am. days. Good night, ma'am. Sure, ma'am. Thank you.